नितेश पतंगे ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ थाने में, जो कि सिडको बस स्टॉप के यहाँ पे एक जो है न्यू स्टार्टअप हुआ है। तो मैंने सोचा, और ये जगह जो मुझे बताई है वो मंदार ने बताया। तो मंदार कब से बोल रहा था कि मुझे यार सर एक बार चलो, क्योंकि बहुत उसने यहाँ पे पहले भी ट्राई किया था तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये जो सर है वो HM वाले स्टूडेंट है, मतलब यार बाय डिफ़ॉल्ट है कि उनके हाथ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और सिडको बस स्टॉप के एग्जैक्ट बाजू में और बेडेकर कॉलेज, जिसको हम लोग थाना कॉलेज बोलते हैं, उसके बाजू में आपको ये जो है इनका आउटलेट दिखाई देगा। तो वैसे तो आज इनका जो है काट्सू कट्टा, यही मैं ट्राई करने वाला हूँ पहले तो। फिर उसके पहले ये जो है ओनर से हम लोग बात करेंगे, इनका जो है स्टोरी जान लेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं रोहिल जी से। Hi guys, I'm Rohil Moile. I'm 21 years old. I'm a IHM Bangalore graduate and I have recently started this brand named Katsu Katta. So here we serve authentic dish named chicken katsu, and this is something which no one else is doing anywhere else in Thane, and I'm damn sure that you'll only find these food dishes only in Thane itself, not even in Mumbai. So make sure you come and do check it out. Thank you. So जब 2021 में graduation हुआ था मेरा, there were like no jobs at the time, and pandemic भी चल रहा था. So once there was a night out at my place, and one of my friends suggested that, Rohil, you are a HM student, so why don't you cook something for us? And तभी I had chicken and I had some breadcrumbs and stuff like that. So मैंने कुछ बनाया and they were like, dude, this is so good, like मैं literally तेरे से खरीदूंगा ये. And then yeah, it was like I started taking orders from my place. Like it was a very small business, and like सबको इतना पसंद आने लगा कि like every time I used to have any orders, they were like, अच्छा हम लोग को पास्ता भी चाहिए, लेकिन वो तेरे पास जो काट्सू है ना वो भी चाहिए हम लोग को. So yeah, it started like that, and the response was so good. Let's give people a taste, something which they have never tasted, and also no one else was doing this kind of food in Thane. चलो, so आज मैं आपको अपना स्पेशलिटी चिकन काट्सू, चिपोtle चिकन काट्सू खिलाऊंगा. Let's go. Okay, so यहाँ पे we have boneless, skinless chicken thighs, which are like more juicy than the chicken breast. So we have marinated it with various like secret spices and ginger garlic paste, some oil, some paprika, and stuff like that. So we're just gonna mix it pretty well, and let's take a nice chunky piece of it. Now we're gonna breadcrumb it. And these are not your regular breadcrumbs, these are panko breadcrumbs, like specially for Japanese food. So it gives you a nice crispiness. Okay, so now this is some nice and fresh iceberg lettuce. So it's gonna give that nice crunchiness since the katsu is deep fried, and it's gonna help to cut the fattiness. Also it will give a nice freshness and crunchiness to the dish. So now we're gonna fry it nice and crispy. So this is some nice good quality stringy mozzarella cheese. So it's gonna give that cheesiness to the dish. Also now we're gonna add some fresh lettuce to it. Finely chopped nice. Some tomatoes. Now we're gonna add some of our special
marinated chicken, like chicken chunks, cooked with some nice spices. Garlic chili sauce, and that's our honey mustard dressing. So it will give you that nice sweetness. Now we're gonna fold it. तो ये कट्सू चिकन आपको हाफ मिलने वाला है 100 रुपीज़ में और टाकोस आपको मिलने वाला है 90 रुपीज़ में हाफ। तो यहाँ पे हमने जो है 2 चीज़ें ऑर्डर की है। एक आप देख सकते हो इनका कट्सू चिकन यहाँ पे रेडी है और एक टाकोस, उसमें भी हम लोग ने जो है चिकन ही ले लिया है। तो दोनों हाफ लिया है और इन लोग ट्राई करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको प्रोटीन और हेल्दी चीज़ें आपको खिला दे। तो आप कभी भी अगर थाने विजिट कर रहे हो या सिडको या ये साइड आ रहे हो कॉलेज, थाने कॉलेज के यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके जो है विजिट करके आप एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपने पहले यहाँ पे अगर कभी खाया होगा तो प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। मतलब भाई जो लोग जिम जाते हैं ना उनके लिए ये एकदम ज़बरदस्त जगह है। मतलब फुल ऑन प्रोटीन मिलने वाला है आपको यहाँ पे। आई होप ये जितना भी मैंने आपको दिखाया आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि कोई अगर खुद का ब्रांड चालू कर रहा है और इतना मेहनत कर रहा है, ये अभी इनका न्यू स्टार्टअप है ना, तो आप भी आपका जो है प्यार और सपोर्ट इनको यहाँ पे आके देना। और मेरा वीडियो देख के अगर आ रहे हो तो उनको बोलना कि मेरा वीडियो देख के आ रहे हो। बाकी सब बढ़िया। तो हेल्दी खाओ, टेस्टी खाओ, खाते जाओ, ये नया स्लोगन चालू कर दिया है। चलो, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।